understand one more concept, which is nothing but what type conversion. So this particular thing is basically used to convert something into some other data type. That means the Python defines a type conversion function to directly convert one data type to another, which is useful in our डे टू डे प्रोग्रामिंग. ओके, जैसे कि हमारे पास अभी एक रिक्वायरमेंट आई थी. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कर रहा था तो वेन एवर आई यूज टू राइट 40 एंड 50 ओवर हियर एंड जब मैं ये एडिशन करता था तो मुझे वो आउटपुट में 40-50 कंबाइन होके मिल रहा था. इसका रीज़न मैंने बता दिया था, बिकॉज योर इनपुट फंक्शन वट एवर यू पास इन इनपुट फंक्शन, ओके, जो भी आप इनपुट देते हो, ये 40 दिया, 50 दिया, सो दिस इनपुट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग. ओके, सो ये अपने आप कन्वर्जन हो जाता है. राइट नाउ आई वांट टू add 40 and 50. That means the expected output is what expected output is 90. But just because your input function is basically it converts your given thing into string, तो मैं इसके लिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था, 40-50 मिल रहा था. सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनटू व्हाट, इंटीजर. सो कैन आई से दैट मुझे ये जो भी ये इनपुट ले रहा हो वो स्ट्रिंग में आ जाता है बाय डिफॉल्ट, तो मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा. तो अगर मैंने कुछ ऐसे इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, सो बेसिकली योर इंट फंक्शन, दिस इज योर इंट फंक्शन. सो दिस फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट अ गिवन डेटा इनटू व्हाट, इनटू इंटीजर. सो नाउ इफ आई सेव दिस, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर थिंग, so it will ask for me to enter some value. Say suppose I write 10 over here, 20 over here, and say suppose 60. So now expected output is what, 80. Now as you can see I am getting 80. So ये क्यों 2060 आउटपुट क्यों नहीं मिला, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी गिवन डेटा था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर यूज फॉर टाइप कन्वर्जन्स. ओके, सो देयर आर वेरियस फंक्शंस. ओके, अभी हम लोग बस 3 ही देखने वाले हैं, इंट, फ्लोट एंड str. ओके, सो देयर आर अदर फंक्शंस टू लाइक tuple, list and so on. Okay, so if you want to convert anything into integer, then you have one function called as int function. If you want to convert something into a float, then you have one function called as float function. And if you want to convert something into string, then you have one function called as str function. So let's execute this particular statements one by one. Okay, so अगर मैं यहाँ पे scripting mode के अलावा मैं ये interactive mode में आ जाऊँ, तो चलो, say suppose मेरे पास एक value है, a is equal to say suppose 10.9. so this is nothing but my float value. How to identify a data type? So you have one function called as type function. Okay, so inside that you have to pass a variable whose data type you want to display. Okay, so if I want to know a data type of variable a, then I will write something like this, type of a. Okay, so this will calculate the data type, this will display a data type which is nothing but float. As you can see, a is of float data type. Okay, now what I want to do is I want to convert this a into integers. Okay, so now what I will do is I will simply use int function. Why? Because I want to convert it into integer. Inside that I want to pass a variable whose value I want to convert. So right now I want to convert a into integer, so I will write something like this, int of a, and this will return an integer number, and let's save this number into a variable. Okay, so now if I print b, now I will get 10. I'm not getting 10.9, I'm getting what, I'm getting 10. Why? Because मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए. सो जब भी कोई फ्लोट वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो उसका पॉइंट के आगे जो भी चीज़ है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है. ओके, सो नाउ इफ आई चेक द
टाइप ऑफ बी विच इज नथिंग बट डेटा टाइप मैंने बी का फाइंड आउट किया, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है. वाई? बिकॉज मैंने इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे कन्वर्ट किया था. सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट फ्लोट इनटू इंटीजर्स. ये हम लोगों ने क्या देखा, हाउ टू कन्वर्ट फ्लोट इनटू इंटीजर. लेट्स कन्वर्ट, say suppose if you have one variable, say suppose c whose value is 66. Okay, now I want to convert. By the way, this is integer type, बराबर ना. type of c निकाला मैंने, तो क्या मिलता है मुझे, इसका data type integer मिलेगा. Okay, so type function क्यों use करते हैं, in order to find out a data type of a given variable. Okay, so basically right now I want to convert this integer number which is nothing but my c. I want to convert this variable into float. So if you want to convert something into integer, you have int function. If you want to convert something into float, you have one function called as float function. Inside that, pass a variable who that you want to convert into float. Say suppose मुझे c को convert करना है float में, so it will always return some floating numbers. So let's save this into a variable. Say suppose n is equal to float c, and now let's print the value of n. Okay, so now as you can see I'm getting 66.0 which is nothing but your floating data type. तो अगर मैंने इसको टाइप निकाला ये n का, तो as you can see ये मुझे क्या मिल रहा है, float मिल रहा है. So this is happening because of type conversions. Okay, so as you can see हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, how to convert a float into integer. So for that you have one function called as int function, and then हम लोगों ने देखा how to convert your normal integer into what, into float. Okay, so int and float functions are used. Int function is used to convert something into integer, float function is used to convert something into float. Okay, so along with that you have one more function which is nothing but str function. So str function is used to convert something into string. So for example, if you have one thing called as 55, okay, so let's say f is equal to 55, and now you want to convert this. Okay, say suppose s is equal to str of f. So what it will do, it will simply convert this f which is nothing but 55 into string, and it will store it into s. So अगर मैंने s को print किया, तो as you can see I'm getting 55, but अगर मैंने इसका डेटा टाइप फाइंड आउट किया यूजिंग टाइप फंक्शन, तो इसका डेटा टाइप देखो, इसका क्या है मेरा str. Okay, that means it is converting into what, it is converting into string. So there are three functions जो हम लोगों ने देखे जो टाइप कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं. Very first is your int function followed by the float function and then the str function. One thing to notice over here is that you should be very careful while converting. ओके, क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ केयरफुल रहना, बिकॉज चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे आपको एरर आ सकता है. ओके, से सपोज you have one variable t is equal to, and it is my string variable which contains one value called as 99, but it is not a number, it is a string, right? Now I want to convert this into integer, so I will use what, int function, and I want to convert this t, and I will store this into a variable, say suppose p variable. Okay, now if I print p, yes, that means I'm getting 99 and it is in an integer format. Now let's say you have one variable called as u variable whose value is, say suppose cs, and now if you try to convert this variable u into integer, then let's say कि क्या होता है, देखते हैं इसको क्या होता है. Say suppose r is equal to int of u. So right now what I'm trying to do here is that I'm trying to convert this string which is nothing but my alphabets into what, into integer. So as you can see it is clearly given over here, invalid literal for int with base 10. That means you cannot give alphabet to convert into integers, which is a common sense, right? How can you represent cs in integer format? No, you can't represent cs in integer format, right? So you cannot convert alphabets into
integer. So you must be very careful while using this, while using this type conversion function. So you have learned 3 type conversion functions. Thank you for watching. Subscribe our channel and share with your friends.